Hello friends, in this video I'll tell you how to respond if someone asks you to give self-introduction. The answer to the question, tell me about yourself. So I'll tell you what are the different elements you can include in your introduction to make it impressive and also to make it complete. तो आइए सीखते हैं कि हम अपना परिचय इंग्लिश में कैसे देंगे. The very first thing you should include is greetings. You should not forget to greet the people there. So you can begin with a formal greeting like good morning everyone, or good afternoon everyone, or good evening everyone. Or if it's a casual occasion or it's just informal, you want to be informal, you can simply greet by saying hello everyone. Next thing to be included is your name. Remember to include your full name. Like my name is, you can write your name or you can speak your name, or you can also say I am this and this. And if you are speaking on phone or if you are giving your introduction on phone, you can simply say this is Seema Kumari. Right, like I have written here, my name is Seema Kumari. But on phone you can begin with the word this. This is Seema Kumari, or this is whatever your full name is. Next part of the introduction is dwelling or your location. There are various ways of sharing this. See, the first way I have written here is I have been living in whichever place is there for 3 years or 2 years or 6 months, whatever is your introduction. Or you can also say I was born and raised in this place, but now I live in this place. See, I have written one example. I was born and raised in Bokaro, but now live in Delhi. ये हम कब बोलेंगे? जब हम ये कहना चाहते हैं कि आपका जन्म कहीं और हुआ था, जन्म पालन पोषण कहीं और हुआ था, लेकिन अभी आप किसी और जगह सेटल्ड हो, तो आप दोनों प्लेस का नाम बताना चाहते हैं. ऐसे सिचुएशन में आप ये एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे. नेक्स्ट पार्ट में क्या इंक्लूड करेंगे? देखिए, एज लिखेंगे अपना या एज बताएंगे. तो कैसे बताएंगे आप? आई एम इन माई अर्ली, और आई एम इन माई मिड, और यू कैन से आई एम इन माई लेट, एंड उसके बाद डिकेड मेंशन करेंगे. 20s में है या 30s में है या 40s में है या 50s में है ना. या तो आप ऐसे भी कह सकते हैं आई एम दिस ईयर्स ओल्ड. रिमेंबर, आपको दोनों में से कोई एक ही एक्सप्रेशन यूज़ करना है. सी, आई हैव रिटन हियर एग्जाम्पल, आई एम इन माई लेट 20s, और यू कैन से आई एम 27 ईयर्स ओल्ड. नेक्स्ट थिंग जो आपको इंक्लूड करना है वो है अबाउट योर फैमिली. मतलब आप कितने भाई बहन हैं, है ना. तो उसको कैसे आप बोल सकते हैं? आई एम वन ऑफ 2 siblings, और आई एम वन ऑफ 4 siblings. और यू कैन ऑल्सो से आई एम एन ओनली चाइल्ड. लेकिन ये आप तब बोलेंगे जब आप इकलौती संतान हैं. जैसे हम 5 भाई बहन हैं तो हमने लिखा है आई एम वन ऑफ 5 siblings. See the next part here. You can include your hobbies. So how to begin? First way is I am a big fan of, or you can include any activity which should be in noun form. Remember, इसका क्या मतलब होता है कि I like something very much. जैसे I have written I am a big fan of swimming. It's a very decent way of talking about your hobbies. Or you can also say my favorite pastime is swimming. Next part is qualifications. So you can begin like I have a bachelor of arts or science or commerce or any other degree, right? In what subject? Second way is I am a particular subject you can mention, and then write graduate or postgraduate. Like I have written here, I have a bachelor of arts degree in English. Next thing to be included is your position and your workplace if you are working.
See, I work as a, then you can mention your post, and then at, you can mention the name of your company, or you can also say I am a, you can mention the post and then at company. See the example, I am a manager at Allen's. The name of the company you can mention. So these are the ways you can talk about your position and your workplace. Next thing is talking about your experience. You can begin like I have, and you can mention the number like 3 years of experience or 6 months of experience in, and talk about particular field. किस फील्ड में, किस क्षेत्र में आपको एक्सपीरियंस है वो मेंशन करना है. जैसे मैंने यहाँ लिखा है आई हैव 15 years of experience in teaching. So these are the elements you can include in your self introduction. I have created one introduction here with the help of the examples. You can also create your own and share in the comment box. आप अगर चाहे तो कुछ और भी इसमें ऐड कर सकते हैं. जैसे आपका अगर कोई अचीवमेंट हुआ तो वो भी आप अपने इंट्रोडक्शन में ऐड कर सकते हैं. लेकिन ये 8 एलिमेंट्स जो है वो नेसेसरी है, जो एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन में होना चाहिए. आई विल बी बैक विथ अ न्यू टॉपिक. कीप सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल. थैंक यू.